एवरीवन, मेरा नाम विश्व मोहन है। इंडिया में क्रिकेट को रिलीजन की तरह मानते हैं और इस रिलीजन का सबसे बड़ा त्योहार, द बिगेस्ट फेस्टिवल, वर्ल्ड कप अभी चल रहा है। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अभी क्रिकेट का फीवर बड़े तापमान से चल रहा है। एंड ऑल ऑफ अस बीइंग इंडियन, वी आर रूटिंग कि भैया इंडिया ही इस बार वर्ल्ड कप जीते। और क्यों नहीं, बिकॉज इस बार इंडिया का जो फॉर्म है वो भी काफी अच्छा। अभी तक एक भी लीग मैच में इंडिया हारी नहीं है एंड वी ऑल आर प्रिडिक्टिंग, रूटिंग कि इंडिया ही इस बार वर्ल्ड कप जीते। नाउ हम सभी अपने अपने तरीकों से, जिस तरीके से हम अपने गॉड को मानते हैं, अपने बिलीफ को मानते हैं, वी ऑल आर प्रेइंग हार्ड टू इंश्योर दैट इंडिया विंस। बट मी बीइंग अ डेटा गाय, अ पर्सन लाइक यू एंड मी हु बिलीव्स इन डेटा, चलिए देखते हैं कि डेटा के बेसिस पे जो अभी स्टैट्स है मेरे पास पिछले कई सालों में जो इंडिया खेलती आ रही है और इस वर्ल्ड कप का करंट फॉर्म, इसके बेसिस पे हु इज गोइंग टू बी द विनर ऑफ ईयर 2023, इंडिया के कितने चांसेस हैं इस वर्ल्ड कप को जीतने के। तो अगले कुछ मिनट में, मेकिंग यूज ऑफ द मशीन लर्निंग, आई विल प्रिडिक्ट दैट हु इज गोइंग टू बी द टॉप 4 टीम्स, who is going to win the semi-finals and final में कौन सी टीम एज अ विनर निकल के आएगी। Considering the multiple factors, ये prediction ही है, right? There's no 100% guarantee to it, but we'll see that through data and through machine learning इसको कैसे करते हैं। और ये अगला वीडियो किसके लिए, ये पूरा का पूरा वीडियो, अगर आप ऑलरेडी डेटा साइंटिस्ट हो, आप मशीन लर्निंग इंजीनियर, तो आपको तो हेल्प करेगा ही करेगा। बट इफ यू आर समवन हु आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, आपको ये समझना है कि भैया एआई की दुनिया काम कैसे करती है, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस होता क्या है, आप इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल शांति से, अच्छे से लास्ट तक देखिए। इट विल हेल्प यू इन मल्टीपल वेज। एक तो आपको ये सीखने में हेल्प करेगा कि डेटा से इंफॉर्मेशन निकालते कैसे, मशीन लर्निंग मैजिक कैसे करता है, और दिस विल गिव यू इनफ क्यूरियोसिटी, इनफ इंटरेस्ट, ताकि आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की दुनिया में गेट स्टार्टेड हो सको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So what you see on the screen right now is a Google Colab. So इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हम बड़ा ही सिंपल सा सेटअप यूज करने वाले हैं। We are making use of Google Colab to write all the code. ठीक है सर। So इस Google Colab में before the source of all the calculation, all the prediction is the data itself. तो सबसे पहले सर डेटा ले लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या डेटा है ना। तो हमने ऑलरेडी कुछ डेटा रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक डेटा रखा है कि भैया इस वर्ल्ड कप में what are the different matches which is happening and when, right? 5 अक्टूबर से मैच चालू हुआ था, इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच में पहला मैच था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। So using the different sources we have figured it out what are the fixtures of the cricket world cup match, where you see that team name, team 2, date, location, group, ये सारा इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे डाल रखा है। एक तो हमारा ये डेटा हो गया कि इस वर्ल्ड कप में कौन कौन से मैचेस और कब किसके बीच में होने वाले हैं। दूसरा डेटा हमने रखा है आईसीसी रैंकिंग का। चूंकि आईसीसी रैंकिंग हर समय चेंज होती रहती है। अभी अगर आज का मैं अगर आईसीसी रैंकिंग देखूंगा तो इट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज हियर। ये आईसीसी रैंकिंग मैंने चूज करा है वर्ल्ड कप शुरुआत होने के पहले, सो दैट आई डोंट गेट बायस्ड व्हेन आई एम यूजिंग दिस डेटा फॉर प्रिडिक्टिंग हु इज गोना बी विनर। फिर हमने ये रखा है वर्ल्ड कप 2023, इसमें कौन कौन सी टीम खेल रही है। फॉर एग्जाम्पल कई ऐसी टीम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्ट इंडीज, वन ऑफ द डोमिनेटिंग क्रिकेटिंग टीम, वो इस बार वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले रही है। तो फॉर दैट इसमें वो सारे क्रिकेटिंग टीम्स के कुछ डिटेल्स हैं जो इस वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका एंड नीदरलैंड। और उन सबकी की टीम रैंकिंग क्या है अभी, कितने टाइटल्स उन्होंने जीते हैं, विन परसेंटेज कितना है, और ये पूरा का पूरा डेटा है वर्ल्ड कप शुरू होने के पहले का, राइट। तो इसमें मेरे पास पूरा डेटा है कि हर जो टीम इस वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं उसके क्या क्या मैट्रिक्स रहे हैं, राइट। वो सारे मैट्रिक्स इस डेटा सेट में है मेरे पास। ठीक है सर। उसके अलावा इन ऑर्डर टू ऑल्सो सी द ट्रेंड, काफी पूरा क्रिकेट तो वैसे काफी सालों से खेला जा रहा है, पर टेकिंग अ डेटा से लाइक 20 इयर्स बैक या 25 इयर्स बैक माइट नॉट मेक सेंस। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि 2015 से लेके अब तक का जो भी डेटा है वो हमने result.csv में स्टोर करके रखा है, जो मुझे एक ट्रेंड देगा कि कौन सी टीम डोमिनेटिंग रही है, कौन सी टीम किससे जीत रही है, वो सारी चीजें यहाँ पे डेट, टाइम, टीम 1, टीम 2, विनर, मार्जिन, ग्राउंड। तो ये सारा डेटा सेट हमने ऑलरेडी रख लिया है। पर आज ऑलमोस्ट सारे लीग मैचेस वर्ल्ड कप के खत्म हो चुके हैं
और मुझे इस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का एक्टिव डेटा भी चाहिए, बिकॉज दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि इस वर्ल्ड कप में टीम्स कैसे परफॉर्म कर रही है, राइट? बिकॉज क्रिकेट इज ऑल अबाउट फॉर्म, द क्रिकेट इज ऑल अबाउट कि अभी किसका फॉर्म अच्छा चल रहा है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट मुझे इस वर्ल्ड कप का भी लेटेस्ट डेटा चाहिए होगा, और उसके लिए हम लोग एक लाइब्रेरी को यूज करने की कोशिश करेंगे। तो लेट मी गो बैक एंड रिमूव ऑल ऑफ दीज एंड एक्सटेंड आवर सेल। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। तो सबसे पहले मुझे और क्या चीज चाहिए यहाँ पे, मुझे चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज दैट वन, एंड दैट विल बी डेटा कलेक्शन। और एक लाइब्रेरी है एक्सट्रैक्ट वर्ल्ड कप डेटा, राइट? पाई में अगर आप जाके देखेंगे तो एक्सट्रैक्ट वर्ल्ड कप डेटा करके लाइब्रेरी है, अ स्मॉल पैकेज टू एक्सट्रैक्ट वर्ल्ड कप 2023 डेटा टाइमलाइन। तो अभी 2023 में जो भी मैचेस हुए हैं उसके लेटेस्ट अपडेटेड डेटा मुझे इससे मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आई एम गोना इंस्टॉल दिस, आई गोना से दैट पिप इंस्टॉल एंड आई गोना से दैट एक्सट्रैक्ट -world cups -data. Let's try to run this and see if it works. Once we have installed it, right? Next step जो हमारा होगा वो उसको यूज करके लेटेस्ट डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। So I go and say that from extract world cup data dot get latest data import and I go and say that get data, और उसके बाद we can say that data equals to get data equals to the df equals to data dot get underscore data, और इस डेटा फ्रेम को अपन क्या करेंगे, आई विल गो एंड स्टोर टू इन द CSV फॉर्म एंड स्टोर इट टू CSV एंड आई गोना से दैट latest underscore. First of all, let's try to read this data frame itself. So let me go into the db.head और रन करके देखते हैं if it works fine. It will take some time for the data to be loaded because it's fetching data. As you can see, I have got the data, latest data. England, New Zealand World Cup, who won? New Zealand won the match. Netherlands, Pakistan won it. Afghanistan, Bangladesh won it. Right? So if I go and see the last data, I can just go and say that, tail. So I could get the latest data. Right? So you can see that the latest matches, Afghanistan, South Africa won. Afghanistan, Australia, that amazing match, right, where the Maxwell scored more than 200. I hope आपने वो मैच लाइव देखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये डेटा यहाँ से उठा लेते हैं, और ये उठाने के बाद द नेक्स्ट स्टेप दैट आई एम गोइंग टू डू इज दैट सेव दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ CSV फाइल। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा df.to_CSV और यहाँ पे अंदर मैं लिखूंगा latest underscore data.csv and again, sorry, it should be data frame not fd, it should be df, और इसको रन करते एंड दिस शुड व्हाट इज टू, ये जो डेटा फ्रेम है उसको मुझे CSV फाइल फॉर्मेट में वो सेव करके दे देगा। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पे मुझे लेटेस्ट अंडरस्कोर डेटा दिख रहा है वर्ल्ड कप का। फेयर इनफ, तो हमने ये डेटा बना लिया है। एक बार जब हमने बना लिया तो लेट्स ट्राई टू इंपोर्ट द इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज दैट आई नीड टू हैव टू एनालाइज द डेटा मोड। तो हमें क्या क्या चाहिए होगा सर, हमें चाहिए होगा इंपोर्ट पांडास, तो चाहिए होगा एज pd। इसके अलावा हमको चाहिए होगा इंपोर्ट, और अपने को चाहिए होगा numpy एज np। अपने को चाहिए होगा इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt, and I also go and use import seaborn for for building different types of the charts as sns. Perfect, इसको रन कर लेते हैं और इन सारी चीजों, oh there's a typo, it should be numpy. If I go and run this, it's done. When this is done, the next step that I need to do is that quickly I'll go and load all this data set in the help of the pandas, load all the CSV data sets, है ना।
सर तो अपन क्या करते हैं, वर्ल्ड कप के डेटा को उठाते हैं वर्ल्ड कप नाम से, WRLD वर्ल्ड कप इक्वल्स टू pandas डॉट रीड अंडरस्कोर CSV and I go and read this world अंडरस्कोर कप अंडरस्कोर 2023 डॉट CSV। ठीक है, ये हमने इसको कर लिया, इसको रीड करके देख लेते हैं, वर्ल्ड कप अंडरस्कोर कप डॉट हेड। go and run this, क्या होगी, वर्ल्ड कप अंडरस्कोर, what is the name of the file, the name of the file, oh there has been typo, so we have to be very careful, Python is very case sensitive, so we have to be very careful in the case, right? So now it's working fine and I'm able to read from this, so team name, team ranking, titles, win percentage, all of these things already there. ये हो गया sir, let's try to read from the other files also, so read the results equals to pd dot read underscore CSV। मैं सारा चीज लाइव लिखने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए इस रिकॉर्डेड वीडियो में, so that you get to understand exactly how things are done, and अगर कोई एरर आ रहा है तो मैं इसको एडिट आउट नहीं कर रहा हूँ, just to showcase you that एरर आना काफी ज्यादा नॉर्मल है when you are writing code itself। so pd dot read underscore CSV और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ results dot CSV और यहाँ पे फिर से इसको रन करके देख लेते हैं, results dot head और सो आई हैव सीन 2015 से अगर आप देखो मैंने जितने भी मैचेस हुए इंटरनेशनल, लोकल नहीं, इंटरनेशनल मैचेस जितने भी ICC द्वारा अरेंज किए हुए उन सारे मैचेस का रिजल्ट आई एम गोना सी थ्रू दिस। परफेक्ट, दिस इज डन। नाउ लेट्स ट्राई टू ऐड अनदर लाइन ऑफ द कोड वेयर आई वांट टू गो एंड रीड द लेटेस्ट डेटा आल्सो। सो लेटेस्ट equals to pd dot read underscore CSV and I have latest underscore data dot CSV। ये वाला डेटा है जो हमने खुद से बनाया था, through the help of the library we loaded that data and we stored in the form of the CSV। एक काम करते हैं, इसको भी देख लेते हैं हेड में क्या है, इसका अच्छे से रीड हो रहा है कि नहीं। So we're going to run this, this will tell me if everything is perfectly fine or not। So now I have fetched all this data and using all this data I'm going to make all the different kind of predictions। Am I clear till this point? Does it make sense? अच्छा, थोड़ी चीजें और देख लेते हैं कि इस जो टेबल्स हैं मेरे, राइट, रिजल्ट्स टेबल, वर्ल्ड कप टेबल, लेटेस्ट टेबल, इन सब का भैया शेप और साइज क्या है, राइट। सो इफ आई गो एंड से दैट प्रिंट एंड आई गो एंड से दैट डा 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 वर्ल्ड कप डेटा shape, and in this case what I can do is and I go and say that world underscore cup dot shape। if I go and run this, it means that there are 10 rows and the 14 columns, right? So typically जो वर्ल्ड कप वाला है इसमें 10 rows होंगे total and there are 14 columns into this, right? So similarly we can go and have the same thing done for the other tables also, da 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 da, and I can say that results and the latest data, latest world cup data, and the results will be typically what I have used results, I'll copy this, paste it here, results, and for the latest let me copy this and again paste it here. If I go and run this, I should get the information about the shape of all of these, right? So we have understood all the data that we have right now. Fair enough. So we have done till this point. The next thing that we have to do now is that we'll have to keep on transforming the data. Now the next thing that we need to do is that we need to transform the data. चलिए, तो what is the next step? तो मेरे पास अब है एक latest data which has the information about this World Cup, और फिर मेरे पास एक पुराना डेटा है, राइट, results.csv, जो 2015 से वर्ल्ड कप के पहले तक जो मैचेस हुए हैं आईसीसी में उनमें रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इन दो मैचेस को अगर आप देखो कि दोनों का टेबल स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम है, इन दोनों को मर्ज करके एक डेटा सेट बना देते हैं, बिकॉज दिस विल हेल्प मी टू ट्रेन माई मॉडल गोइंग अहेड।
तो इन दोनों को मिला देते हैं। सर को उनको मिलाएंगे कैसे? लेट्स ट्राई टू सी दैट। सो लेट मी ऐड अ कोड ब्लॉक, सॉरी हियर, लेट मी ऐड अ कोड ब्लॉक हियर। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिजल्ट्स करके pandas डॉट कॉनकैट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक अरे ऑफ, तो एक मेरा रिजल्ट्स वाला टेबल तो है ही, और उसमें मैंने एक लेटेस्ट वाला भी ऐड कर दिया है, और ऑप्शन मैंने दिया एक्सेस इक्वल्स टू 0, ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या करना होगा, रिजल्ट, एक्चुअली रिजल्ट्स टेबल है, आई शुड रिजल्ट्स इक्वल्स टू रिजल्ट्स डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स, और यहाँ पे मैं करूँगा ड्रॉप इक्वल्स टू ट्रू, एंड देन आई गो दैट रिजल्ट्स dot tail 5. Let's try to run this and see what has happened. Concat. So if I go and run this, there was a typo here. Perfect. So the last till 10th of November तक भैया रिजल्ट कर रहा है, तो आपको पता है कि मैं ये कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ. If you're watching till this point, just pause the video and tell me that what is that time when I would be recording this video. ठीक है सर, तो ये हमने कर लिया है, मेरे पास ये रिजल्ट आ गया है. ठीक है, अब इस रिजल्ट्स का थोड़ा एक बार शेप देख लेते हैं. So for that what I do, I go into the results dot shape, and such shape is a property, not a method. So if I go and run this, so 806 rows हैं, यानी there's 806 entries of the matches, and there's 7 columns. Let's try to see that what are the columns, right? So I go and say that results dot columns, and if I go and run this will give me the name of the columns. Date भैया जरूरी है क्या? Team 1, Team 2, winner, margin, ground, unnamed. भाई ये unnamed वाला जो है वो column मेरे को समझ में नहीं आ रहा. It's not of much use to me. So let me go and drop this. How can I go and do this? I can just say the results dot drop, and I go and say that columns इक्वल्स टू, और अरे में उसका नाम डाल देंगे. तो नाम क्या है भैया? अननेम्ड 0. इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से. Go and copy this like this and then put it here. ठीक है, कॉलम्स का नाम हमने डाल दिया है. उसके बाद हम डालते हैं एक्सेस इक्वल्स टू 1 इन प्लेस इक्वल्स टू 2. ये सारे ऑप्शंस अपन डालेंगे. ट्रू का टाइप हो गया है यहाँ पे. इन पाइथन वी डू लाइक दिस, ट्रू. And after doing this, I again go and say that results dot head. Let's try to see what happens post this. ये जैसे ही भैया हमने रन किया, फिर से what is in place, मैं कुछ ज़्यादा ही टाइपो कर रहा हूँ. If I go and run this, I get this answer: date, team 1, team 2, winner, margin, ground. Perfect. तो अब मेरे पास ये वाला कॉलम जो मुझे नहीं चाहिए था, it's not there. ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू मूव फर्दर. एक बार जो हमने कर लिया, अगर आप देखोगे इसमें तो डेट है, मार्जिन है और ग्राउंड है. नाउ मेरे लिए एक्चुअली डेट कौन से दिन मैच हुआ उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. इन ऑर्डर टू नाउ मेरे लिए डेट कॉलम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई इफ बिकॉज अगर ऐसा नहीं है कि थर्सडे को मैच होगा तो टीम एक्स जीत जाएगी और टीम वाई हार जाएगी, राइट? डेट हार्डली हैज अ मैटर. सिमिलरली जीत और हार इज इंपॉर्टेंट, नॉट द मार्जिन ऑफ द विक्ट्री. एंड थर्ड द ग्राउंड ऑल्सो. सो दीज 3 कॉलम्स अगेन आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मी. सो व्हाट आई एम गोना डू इज दैट जो डेट का कॉलम है, ये जो मार्जिन का कॉलम है और ये ग्राउंड का कॉलम है, उसको भी मैं अभी जाके चेंज कर दूंगा. तो लेट्स ट्राई टू ड्रॉप ऑल दोज कॉलम्स. सो आई गोना से द रिजल्ट्स डॉट ड्रॉप, और एक बार फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं, पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे. लेट मी गो एंड पुट इट हियर. और अपने को क्या हटाना है? डेट, मार्जिन एंड द ग्राउंड, राइट? सो आई गो एंड कॉपी डेट, लेट मी गो एंड पेस्ट इट हियर, डेट, एंड देन margin
and then ground, right? These are the three columns that I need to go and remove. Now if I go and do this, and let me go and set the results dot head, try to run this. Perfect. So I have been able to get this results वाला table जहाँ पे कि मेरे पास information है team 1 कौन सी है, team 2 कौन सी है और उसमें winner कौन सा है. ठीक है, ठीक है. Now as we know that in this World Cup we have only the limited teams who is participating, right? तो अपने को उसी टीम से मतलब होना चाहिए जो इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करे. फॉर एग्जांपल वेस्ट इंडीज, उसको एनालाइज करने का कोई फायदा ही नहीं है बिकॉज इट इज नॉट, दैट टीम इज नॉट वर्किंग इन दिस, playing in this World Cup, right? So let's try to do that analysis. So what I do now is that let me go and see the World Cup teams, World Cup underscore teams. Let me go and write this and I'll explain you what I'm doing. What are the teams? So I have a team which is England, perfectly fine. I have a team which is South Africa, right? And I can just go and copy paste the names from this table, right? I have something called as the West Indies. I have Pakistan. I have So these are my World Cup teams: England, South Africa, West Indies, Pakistan, New Zealand, Sri Lanka, Afghanistan, Australia, Bangladesh, India. Let's try to run this. ठीक है, अब मेरा जो एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है उससे मैं इस टीम्स के रिजल्ट को फिल्टर आउट करने की कोशिश करूंगा, राइट? तो आई गो एंड से दैट df underscore teams underscore 1 and I go and set that results. Let me go and write df underscore teams underscore 1 not head. Run this. I get this. So I get the list of df team 1 which is playing in this World Cup and we have the data in the results table, right? Similar thing if I want to go and do, right? So let me go and remove this. I can just copy paste this and I can say that df teams 2 results team underscore 2. This is the World Cup. This is what I go and do this, and then I go and say that data frames underscore winners equals to results, and I go and say the results winner is in World Cup teams. Fair enough. And then what I need to go and combine. So I got the df underscore teams equals to pd dot concat. Concat के अंदर मैं एक array पास, एक tuple पास कर दूंगा of df underscore team underscore 1 comma df two and df underscore winners. And I go and say that x is equals to 0 and I go and say that df underscore team and I go and say that head. We go and run this
I've been able to concatenate team 1, team 2 and the winner. Perfect. So far what we have done, we have transformed this data for the teams who is actually playing this World Cup. ठीक है. Now if you see this table sir, यहाँ पे team 1 तो सही है, team 2 भी सही है, winner जो है वो एक strings है, right? अब string वाले कॉलम पे एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल होता है. So what we would like to do, we would like to convert some column into a numerical column. इसमें कुछ numerical value हो, because numerical data पे processing करना ज़्यादा आसान होता है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कॉलम बना देंगे, उसका नाम रखेंगे winning और उसमें वैल्यूज डाल देंगे, राइट? कि टीम 1 जीतेगी तो वैल्यू होगा 1, अगर टीम 2 जीत रही होगी तो वैल्यू होगी 2. लेट्स ट्राई टू सी हाउ वी कैन डू इट. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, df अंडरस्कोर टीम जो हमने बनाया है डॉट loc एंड आई गोइंग सेट ऑल द रोज. इस पहले पैरामीटर का मतलब होगा सारे रोज को भैया ले लो, और कॉलम्स में कौन सा ले लो भैया, विनिंग वाला कॉलम ले लो. एक कॉलम बना दो विनिंग, ठीक है, equals to numpy where and I want to say that df underscore team and I want to say that winner equals to df underscore team team 1. अगर ऐसा है तो 1 डाल दो, नहीं तो 2 डाल दो. ठीक है, ये हमने लिखा. एंड लेट मी वन से दैट df अंडरस्कोर टीम एंड आई वन से दैट डॉट हेड. लेट्स ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस. वी कैन रन दिस. विनिंग आ गया. अगर न्यूजीलैंड जीत रही है तो 2 आ गया. अगर पहली टीम जीत रही है, साउथ अफ्रीका यहाँ पे पहली टीम जीत रही है, तो वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया. तो हम एडेड दिस विनिंग वाला कॉलम. जब ये विनिंग वाला कॉलम बन गया है तो ये जो विनर वाला कॉलम उसकी जरूरत नहीं है, तो आई कैन गो एंड ड्रॉप दिस कॉलम. सो व्हाट फॉर दैट व्हाट आई कैन डू इज दैट मैं ऊपर वाला एक बार कमांड कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ये वाला ड्रॉप से उठा लेते हैं, राइट. और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे भैया df अंडरस्कोर टीम डॉट पेस्ट कर दो कॉलम. कौन सा कॉलम हटाना है, विनर वाला हटाना है, तो उसको आप सबको हटाइए, यहाँ पे विनर वाला लगाइए एक्सेस 1 एंड यहाँ पे फिर आप करिए df अंडरस्कोर टीम और डॉट हेड. इसको अगर रन करते हैं, लेट्स ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस. तो अब मेरे पास टीम 1 है, टीम 2 है और विनिंग वाला डेटा है. ठीक है, अब डेटा को ना ट्रांसफॉर्म करेंगे, थोड़ी ना वन हॉट ऑन कोडिंग वगैरह चीजें अपने को करनी पड़ेंगी. तो लेट्स ट्राई टू डू दैट. हाउ डू वी डू दैट? सो फॉर द वन हॉट इनकोडिंग विल हैव टू मेक यूज ऑफ sklearn लाइब्रेरी, जो हम लोग ऑलरेडी अपने सिस्टम में ला चुके हैं. तो फॉर आई डू फ्रॉम व्हाट आई गोइंग टू हियर इज दैट आई गोइंग टू से दैट फ्रॉम sklearn dot pre-processing import one hot encoder. ठीक है, from sklearn dot pre-processing import one hot encoder. That's perfectly fine. From sklearn dot model underscore separation, model underscore selection. Perfect. Import train test underscore split. Fair enough. ये हमने कर लिया. इसको रन करके देख लेते, कोई टाइप ऑफ तो नहीं है. Yeah, it's worked perfectly fine. Once that is done, then I go and add another code block. So I need to apply the encoding. What I need to do? I need to apply the encoding. Encoding apply करने के लिए करेंगे हम लोग df underscore team equals to pd dot get underscore dummies, और इसके अंदर में अपन डालेंगे df underscore team comma prefix equals to team underscore 1 comma team underscore 2. और भैया कॉलम्स कौन कौन से होंगे, कॉलम्स होंगे कॉलम्स इक्वल्स टू team underscore 1 comma team underscore 2. यहाँ पे भी एक और लगा दो और यहाँ पे एक और ऐसे लगा देते हैं. team 1 team 2 हो गया मेरा. एंड उसके बाद डेटा टाइप क्या है भैया, ये तो int है, d टाइप equals to int sparse equals to false. Fair enough. और उसके बाद देखते हैं ये जो हुआ df team डॉट हेड क्या रिजल्ट आता है, इसको लर्न करके देख लेते हैं. लेट्स ट्राई टू रन दिस.
तो वन हॉट एनकोडिंग भैया यहाँ पे हो गई है, राइट? इंस्टेड ऑफ हैविंग द स्ट्रिंग डेटा which would be tough for us to process, we have done the one hot encoding. 0 1 से हमने इसको रिप्लेस कर दिया है. Fair enough. ठीक है, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डेटा को विल गो एंड स्प्लिट इनटू द x एंड द y. सो आई गो एंड से दैट x इक्वल्स टू df अंडरस्कोर teams dot drop and I go and say that columns equals to winning and x is equals to 1. It is team, not teams. And y equals to df underscore teams and last वाला winning. ठीक है, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं. इफ इट वर्क्स फाइन. columns. टाइपो तो यहाँ पे, सो आई गो एंड रन दिस. इट्स वर्क, इट शुड वर्क फाइन. ठीक है सर, यहाँ पे हो गया. अब इसको हमको स्प्लिट करना पड़ेगा. What in splitting the data into the training and testing set. तो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट में इसको स्प्लिट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सो x अंडरस्कोर ट्रेन, x अंडरस्कोर टेस्ट, कॉमा y अंडरस्कोर train, comma y underscore test equals to train underscore test underscore split x y test underscore size 0.2 random underscore state equals to 34. ये हमने कर लिया. लेट्स ट्राई टू रन दिस. y अंडरस्कोर ट्रेन, y अंडरस्कोर टेस्ट, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था. इफ आई गो एंड रन दिस नाउ, ये आ गया है. इसको रन करके देखते हैं कि भैया वैल्यू क्या क्या हुई है. एक सेकंड, शुड बी x ट्रेन, y ट्रेन. लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड x अंडरस्कोर ट्रेन. इसको अगर हम रन करें तो ये मेरा ट्रेनिंग वाला डेटा है जिसमें सारे कॉलम्स है सर, एक्सेप्ट द लास्ट कॉलम, राइट? इसमें सारे कॉलम्स है एक्सेप्ट द लास्ट कॉलम. राइट, सो दिस इज हाउ माय टेस्ट ट्रेनिंग डेटा इज. राइट, and similarly if I move down now and I go to y underscore train and run this, this is my training data. Fair enough, cool. So this is done now. Now I have divided my data into the training set and the test set. अगला step क्या होगा? Can you guys just pause the video and tell me what should be the next step? नेक्स्ट स्टेप होगा, मुझे इस मॉडल को ट्रेन करना होगा. जो मेरा ट्रेनिंग सेट है उसमें मैं ट्रेन करूंगा और फिर टेस्ट सेट पे जाके मैं देखूंगा कि जो मॉडल मैं डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा हूं भैया उसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितना ज्यादा एक्यूरेट है वो. सो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी दैट. सो नाउ लेट्स ट्राई टू फिट द डिफरेंट मॉडल्स क्लासिफायर एंड सी की कौन सा मॉडल हमारे लिए फिट बैठेगा. तो 2-3 ट्राई करते हैं और जिसकी सबसे ज्यादा एक्यूरेसी होगी विल ट्राई टू स्टिक टू दैट. ठीक है सर, तो फॉर दैट लेट्स ट्राई टू फिट द मल्टीपल मॉडल्स. सो आई कैन से दैट फ्रॉम sklearn डॉट ट्री import and I can say that decision tree classifier. तो हमने एक डिसीजन ट्री क्लासीफायर ले लिया है. दूसरा एक और अपन कॉपी कर लेते हैं फ्रॉम sklearn डॉट and I can say that ensemble import
रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ठीक है। फिर हमने लिया फ्रॉम sklearn एंड आई गोइंग टू डू, तो एक लीनियर मॉडल ले लेते हैं, लीनियर अंडरस्कोर मॉडल import and I'm going to do this logistic regression, ठीक है। ये तीनों हमने ले लिया है और फिर मैट्रिक्स के लिए अपन कर सकते हैं फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स import and which is accuracy underscore score from sklearn dot pipeline import and I can say that pipeline, ठीक है। ये सारे इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं इफ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। सारा इंपोर्ट हमारा सही तरीके से हो गया है। नाउ लेट्स ट्राई टू डिफाइन द क्लासिफायर, लेट्स गो एंड डिफाइन क्लासीफायर्स। कैसे करेंगे क्लासीफायर्स करके, हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं, एक वन से दैट रैंडम फॉरेस्ट इक्वल्स टू रैंडम फॉरेस्ट classifier comma, very nice, then I have logistic regression, this should be fine and should be the logistic regression comma, and then I have decision tree क्लासीफायर। इसका ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है, तो आई हैव द मल्टीपल क्लासीफायर्स राइट नाउ ऑलरेडी डिफाइंड, और नाउ इस क्लासीफायर पे व्हाट आई डू इज ट्रेन एंड फॉर ईच ऑफ दिस क्लासीफायर आई विल गो एंड ट्रेन एंड देन टेस्ट माय मॉडल एंड व्हाट इज द एक्यूरेसी। सो काइंड से फॉर नेम कॉमा clf in classifiers dot items pipeline classifier, this is fine, pipeline equals to pipeline, और अरे में अपन डाल देते हैं, क्या डाल सकते हैं, क्लासीफायर कॉमा clf, ठीक है। पाइपलाइन डॉट फिट, और यहाँ पे हम डालेंगे x अंडरस्कोर ट्रेन तो ये पाइपलाइन डॉट फिट हो गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, आई हैव टू मेक प्रेडिक्शंस, सो y अंडरस्कोर pred equals to pipeline डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले फिट कर लिया ट्रेनिंग डेटा, और उसके बेसिस पे जब मेरा मॉडल तैयार हो गया है तो मैं उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो आई गो एंड से दैट प्रिडिक्ट x अंडरस्कोर टेस्ट, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट द एक्यूरेसी, ठीक है। तो एक्यूरेसी के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू एक्यूरेसी स्कोर, inside that I will pass that y underscore test and y underscore predicted value, and for each of these what I'm going to do is that I'm going to print and I'm going to say that f and I'm going to say that name accuracy .4f,
So let's try to run this and see what is the accuracy that we have got. Pipeline, okay, this should be E. I'm purposefully not removing these kind of, the mistakes in the edit, just to ensure that every time when we write the code from the scratch, we do get errors. Okay, there's another error. What we do this? This should be under the brackets. Okay, so I've got that, random forest की accuracy है 0.83, logistic regression की accuracy is 0.80, and decision tree accuracy is coming around 0.82. So random forest is getting me the highest accuracy of around 83%. So what I'll do, I'll go ahead with the random forest. 83% is a decent accuracy. Now if I want to, so since we have seen the random forest classifier has the highest accuracy, so let's make use of the random forest classifier, है ना, उसको apply करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे अब, है ना. So I can just go and copy the same line. I have already, imported this, so I don't have to write this. So I go and write now RF equals to random forest classifier, and then I go into the RF dot fit x underscore train comma x underscore test, sorry, y underscore train. ठीक है, इसको अपन यहाँ पे should be smaller y. Let's try to run this. ठीक है, अब अपन प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रैंडम फॉरेस्ट. सो आई कैन से दैट प्रेडिक्शंस इक्वल्स टू रैंडम फॉरेस्ट डॉट predict, and I go and pass x underscore test. Then I go and run this. Then I go into the label. अब मैं क्या करूँगा कि अब टीम को लेबल कर देते हैं ना, तो I go and say that label underscore to underscore team equals to डिक्शनरी डाल देता हूँ 1 equals to team underscore 1 comma 2 equals to team underscore 2, and then I go and create a new column winner, and हमारा जो डेटा फ्रेम है उसमें एक नया कॉलम बनाते हैं विनर का बेस्ड ऑन दिस प्रेडिक्शन. सो आई go and say that winner equals to label to team, and I go and pass the label for label in predictions. ठीक है, and then I go and set the print and winner. If I go and run this, I get these predictions. Fair enough. So 1 के बदले में team 1, 2 के बदले में team 2, and I got this kind of predictions. Perfect. Now अभी तक तो ठीक थी. Now what I should do is that I should also make use of the ICC ranking of these teams, क्योंकि उस वाले डेटा का तो हमने अभी यूटिलाइजेशन करा ही नहीं है. So let me make use of the ICC ranking of the team to give the weightage, more weightage to the team which is higher in the rank, right? So let's try to give that weightage. So for that what I go and do is that I go and say that rankings
इक्वल्स टू pd.read_csv और यहाँ पे हम लोग फाइल डाल देंगे icc_ranking.csv। एक बार देखते हैं रीड हो पाया कि नहीं हो पाया। रैंकिंग्स डॉट हेड, रन दिस, ठीक है। और वर्ल्ड का फिक्सचर्स भी देख लेते हैं बिकॉज उसी की बेसिस पे तुमको प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। सो आई कैन से दैट फिक्सचर्स इक्वल्स टू pd.read_csv एंड यहाँ पे हो जाएगा fixtures.csv। let me go and read this fixtures.head। if I go and run this, ठीक है, तो फिक्सचर्स भी हो गए हमारे पास, ठीक है। अब एक एम्प्टी सेट बनाते हैं टू स्टोर द प्रेडिक्शन रिजल्ट्स, राइट। सो आई कैन से दैट प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स प्रेडिक्शन सेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर करना है भैया, prediction underscore set equals to this empty list, okay, and then I want to say the fixtures dot insert one first position and then I want to put that fixtures team_1 dot map रैंकिंग्स ही लिखा ना, स्टोर किया रैंकिंग्स, परफेक्ट। रैंकिंग्स डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स और इसके अंदर में टीम अंडरस्कोर नेम और फिर इधर टीम अंडरस्कोर रैंकिंग। कॉपी कर लेते हैं। फिक्सचर्स डॉट इंसर्ट यहाँ पे 2 हो जाएगा, फर्स्ट के बदले में इधर हो जाएगा सेकेंड पोजीशन, राइट। एंड फिक्सचर्स टीम 2 टीम नेम टीम रैंकिंग और फिर उसके बाद हम लोग फिक्सचर्स में क्या करेंगे, फिक्सचर्स डॉट 𝐒𝐤𝐢𝐥 टॉप 80 लेते हैं, सारी लेने की जरूरत है नहीं, तो 80 रोज लेते हैं एंड देन ऑल द कॉलम्स। एंड देन फिक्सर्स डॉट हेड। लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड सी इफ इट वर्क्स फाइन। परफेक्ट, तो ये सारा कैलकुलेशन मेरा अभी सही हो गया है, ठीक है। अब ये होने के बाद what I need to do, I need to एक काम करता हूँ, इसके बाद मुझे क्या, now the next thing that I need to do is that I need to predict the winning team based on the current positions or current position of the team in the fixtures, right? So let's try to see that. So I go and write for index row n fixtures dot iter rows, perfectly fine, and then I come down if row first underscore position is less than row second underscore position, ठीक है। इन दैट केस क्या करेंगे अपन करेंगे प्रेडिक्शन सेट डॉट अपेंड और यहाँ पे हम लोग डालेंगे टीम अंडरस्कोर 1, टी कैपिटल होना चाहिए, टीम अंडरस्कोर 1 वैल्यू शुड बी द रो एंड आई गो एंड से दैट टीम अंडरस्कोर 1। फिर यहाँ पे क्या करो, फिर आप यहाँ पे टीम 1 आपने डाल दिया है, कॉमा करिए यहाँ पे, एक सेकेंड, ये ब्रैकेट के अंदर में आना चाहिए था,
this is fine, and then I go and say that again team underscore 2 और ब्रैकेट के अंदर मैं ये कॉपी कर लेता हूँ मैं रो and it should be team 2. team 1 है और यहाँ पे है team 1, ठीक है. And then I also will have to go and write winning team, winning underscore team, and I go and call this as none. Fair enough. So I go and do this. So if this happens, I do this, else what I will do, I will go and say this टू और यहाँ पे हो जाएगा team 1 winning team equals to none. ना अब क्या करेंगे, ये जो pred set है उसका डेटा फ्रेम बना लेते हैं. तो pred underscore set equals to pd dot data frame और इसके अंदर में अपन डाल देते हैं pred underscore set को. वेरी नाइस. और इसको अपन देख लेते हैं थोड़ा सा है क्या pred. इसका एक बैकअप बना लेते हैं pred underscore set and I want to say that head. Let's try to run this and see if that works fine. Acha, there is a typo. It should be I first position if I go and run this. So I got this predefined set equals to head. Perfect. तो हमारा ये prediction set बन गया है. चलिए इस predictive set जो है उसका एक बैकअप बना लेते हैं because I'm gonna make use it in the coming slide. और जो प्रिडिक्शन सेट है उसको थोड़ा सा अभी मॉडिफाई अपन कर लेंगे. तो लेट मी गो एंड क्रिएट अ बैकअप ऑफ pred underscore set equals to pred underscore set. ये बैकअप बना के अपन रख लेते हैं, इसको बाद में अपन यूज करेंगे. तो लेट मी रन दिस. ठीक है, ये हो गया है. नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू अप्लाई द वन हॉट इनकोडिंग ऑन द इनपुट कॉलम्स. सो फॉर दैट व्हाई आई गो एंड डू दिस pred underscore set equals to pd dot get underscore dummies, and then I want to set the pred underscore set comma prefix equals to, and I want to say that team underscore 1 comma team underscore 2, and then I want to set that columns equals to same team 1 team 2. इसको कॉपी कर लेते हैं भैया, यूज कर लेंगे. वी कैन सेव सम टाइपिंग हियर. सो आई कैन प्रोवाइड दिस कॉलम्स एंड व्हाट इज द डेटा टाइप. द डेटा टाइप इक्वल्स टू इंट. ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड द मिसिंग कॉलम्स इन द फाइनल डेटा सेट compared to the transferred column. So what I go into this, I go and say that missing underscore calls equals to set data frame underscore teams dot columns minus set, and I have the pred underscore set dot column. ठीक है, मिसिंग कॉलम्स हमने इस तरीके से निकाल लिया है. ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं एक बार यार, चल रहा है कि नहीं चल रहा है. तो ये मेरा चल रहा है. ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू इज दैट फॉर कॉल्स इन मिसिंग underscore calls, and I go and write pred underscore set, and I go and say that calls equals to 0, and then I go and say that pred underscore set equals to pred underscore set
and I put here data frame underscore team dot columns. Fair enough. Now I need to drop the winning wala column, right? I need to go and drop the winning wala column. So I can set the pred underscore set equals to pred underscore set dot drop, and I put here winning, and then I go and do this axis equals to 1 and pred underscore set dot head. ठीक है, इसको रन करके देखते हैं. What should I get here? Perfectly very fine, right? So अब क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं. I think we have all the things done, and let's try to start doing the predictions, right? So what I go and do is that I go and write the predictions equals to rf dot predict pred underscore set, and then I go into the for I in range. And I go and say that fixtures dot shape, और शेप के अंदर में मैंने 0 ले लिया है, तो जितने सारे रोज है, जितने सारे एंट्रीज है, सबके लिए इट विल गो एंड आइटरेट, राइट? एंड देन आई गोन से दैट प्रिंट बैकअप. कॉमा 1 होना चाहिए प्लस वर्सेज, that should be a gap, प्लस बैकअप. कॉपी कर लेता हूँ उसको. ये हो गया. If predictions I is equals to 1, I don't have to actually, in that case I go and write print winner, and I can go and say that 1 else print winner as 0, right? And let's post that. I think that should be fine. Let's try to run this and see if it works. Not this, no? This should be plus. Let's try to run this. Sri Lanka versus Afghanistan. Let's try to reformat this a little. Winner. Let's try to do this and rerun this. I'll get a more formatted result. Sri Lanka versus Pakistan, winner is Sri Lanka. Pakistan versus Bangladesh, winner is Bangladesh. Like this, there is a predictions which has happened. Now it is the show time. This is the time when we are gonna predict कि भैया semi-final में कौन-कौन पहुंचा है, and semi-final में who all is gonna win, and then finally who is going to win the finals of World Cup 2023. So all the hard work is done. Let's try to move on to the next step where we go and predict the winners of the semi-final and the finals. So let's get started. ठीक है? So what I do now is let's try to go and see that latest dot head. ठीक है, इसको अगर अपन रन करेंगे तो दिस वाज द लेटेस्ट, द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ओवर ऑल द मैचेस दैट वी हैड. इसमें से ड्रॉप कर देते हैं सर कुछ कॉलम्स को, राइट? अननेम्ड डज नॉट मेक सेंस, सो लेट मी गो एंड ड्रॉप दीज कॉलम्स ऑफ दिस. So if I go and do this, latest dot drop columns,
and let me go and take this named equals to 0. Axis equals to 1 and in place equals to true. और फिर से करने के बाद एक बार इसको फिर से देख लेंगे latest dot head करके. So if I go and run this, अच्छा यहाँ पे एक कॉमा आ गया है. If I go and run this, I get this. Who are the top winners? So if I go and try to find the top winners from this equals to latest, and I go and say that winners dot value underscore count dot head, और इसके अंदर मैं 4 डाल दूँ डॉट इंडेक्स dot to list method. You will say the print f top 4 teams. I go and write top underscore winners and I go and run this. This will give me the top 4 teams which is going to be in the semifinals. What happened? Let's just be counts head. If we go and run this, so it happens here. So I got India, South Africa, Australia, New Zealand who are going in the semi-final. So now let's need to go and predict the matches. No, I need to go and predict each single match, right? So let's try to write the code for the same, right? So let me know. I need to go and predict the single match results of future. When they predict underscore single underscore match model rankings team underscore 1 comma team underscore 2. It's a single underscore match underscore data equals to pd dot data frame. ठीक है, pd डॉट डेटा फ्रेम हमने बना लिया है और इसके अंदर में हमने डाला है क्या क्या टीम अंडरस्कोर 1 की वैल्यू क्या होगी टीम अंडरस्कोर जो आर्गुमेंट में पास करा है वो, and then I will have the team underscore 2 and that should be the team underscore 2. ठीक है, अब क्या करेंगे, we'll try to insert the team ranking. The team ranking data. So it's a single underscore match underscore data dot insert first underscore position, and I go and pass single underscore match underscore data team underscore 1 dot map, and I go and say that map rankings dot set underscore index, और इसके अंदर मेरे पास क्या है टीम अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे टीम अंडरस्कोर रैंकिंग. ठीक है, ये हमने लिख लिया. लेट मी गो एंड कॉपी पेस्ट दिस. इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे लिख लेता हूँ सिंगल मैच डेटा इंसर्ट, और दूसरे पे next to, and this should be second position single match data team 2 map team name team ranking. This looks fine. Now what I know, I'll go and apply the one hot on coding. Apply one hot in coding
ठीक है। तो सिंगल अंडरस्कोर मैच अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू pd डॉट गेट अंडरस्कोर डमीज, और यहाँ पे मैंने लिखा सिंगल अंडरस्कोर मैच अंडरस्कोर डेटा and you can set that prefix equals to team underscore 1 comma team underscore 2, and then I going to provide columns equals to team underscore 1 comma team underscore 2। और उसको करने के बाद अपन क्या करेंगे भैया, that should be not the end of the column, this should come here, and d type equals to int. So what I do, single match data equals to pd dot get dummies, single match data prefix team1 team2 columns team1 team2 d type is equal to int. Now I need to go and find the missing columns. So I can say that missing underscore columns equals to set df underscore team dot columns minus set of single underscore match underscore data dot columns। ठीक है सर, ये हमने कर लिया है। उसको करने के बाद what we need to, we need to set the missing columns to 0, columns to 0, and then keep only the columns present। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं लूप लगाऊंगा फॉर कॉल इन मिसिंग अंडरस्कोर कॉल्स, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिंगल अंडरस्कोर मैच अंडरस्कोर डेटा, एंड हियर मेरे पास कॉलम इक्वल्स टू 0, and what I do, single underscore match underscore data equals to single underscore match underscore data df dot team dot columns। ठीक है भैया, इस सिंगल मैच डेटा वाले को मैंने चेंज कर लिया है। नाउ व्हाट आई डू, आई डोंट ड्रॉप द विनिंग column, so I consider single underscore match underscore data single underscore match underscore data dot drop winning comma access equals to 1, and now making the predictions, so I consider that prediction equals to model dot predict single underscore match underscore data, and then print the result. Print f team underscore 1 versus team underscore 2 1, then I go and say that print team 2,
और उसके बाद सिंपली प्रिंट कर दें. Now let's try to run this and see if this works fine. I'm hoping that I have not done any typos here. Perfectly fine. So this is done. Now I need to define the semi-1 results, right? So right now I'm going to predict the. So this is the time when I'm going to announce the result of our model. So predicting the first semi results, right? So how do I do it? I go and set that predict underscore single underscore match. मेरे पास RF, rankings, India, New Zealand. Fingers crossed, I don't know what is going to happen. Let's try to run this and see what our machine learning is saying. The first semi-final between India and New Zealand, who's going to win? Let's try to run this. Now let's try to run this. If I run this, I get error. Again, there's a typo. Let's try to quickly fix it. Okay, it was team 2. We'll be going quickly go through each of the line if everything is working fine. This looks okay. This looks okay. This looks okay. It should be data frame underscore team. This is 1. And this should be single match data. Perfect. Let's try to run this. और अब फिर से रन करके देखते हैं कि भैया इंडिया और न्यूजीलैंड का जो पहला सेमीफाइनल होने वाला है, हु इज गोइंग टू बी द विनर इन दैट. ओ माय गॉड, यस, पर माय डेटा मॉडल जो पहला सेमीफाइनल होने वाला है, इंडिया इज गोइंग टू बी द विनर. लेट्स ट्राई टू सी कि दूसरा जो सेमीफाइनल होगा उसमें कौन विनर होगा, सेमी 2. सो उस वाले मैच में फिर से अपन यहाँ पे कर देते हैं प्रेडिक्ट सिंगल मैच, एंड इन दैट आई गो एंड डू दिस रैंकिंग्स. ऑस्ट्रेलिया एंड दूसरी टीम कौन सी है भैया, इट इज साउथ अफ्रीका. लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड सी हु इज द विनर इन दिस केस. सो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में पहली दफा साउथ अफ्रीका में भी फाइनल में जाए. माय मशीन लर्निंग मॉडल इज सेइंग दैट साउथ अफ्रीका इज गोना विन द सेकंड सेमीफाइनल एंड देन दिस फाइनल वन. अगर साउथ अफ्रीका जीतता है और इंडिया जीतता है तो फाइनल शुड बी बिटवीन हुम, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका. सो इफ आई गो एंड रन दिस, इंडिया and South Africa, and if I go and run this is the final moment I was waiting for. Let's try to run this. Let's root for India and the final winner is India. तो मेरा machine learning model ये बता रहा है कि India is going to World 2023 World Cup. Do you guys agree with me? अगर आप इसी तरीके से मशीन लर्निंग के पावर से फैसिनेटेड हैं, अगर आप इससे इन्फ्लुएंस्ड हैं, आप ये जानना चाहते हैं, we have multiple running batches around the machine learning. अभी हाल ही में हमने लॉन्च करा है वेरी अफोर्डेबल, दुनिया का सबसे अफोर्डेबल बैच, डिकोड डेटा साइंस विद मशीन लर्निंग, वेयर आई विल टीच यू एवरीथिंग इन डेप्थ ताकि आप इस तरीके के प्रेडिक्शंस खुद से कर पाओ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.